Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Today in this video we will be discussing as to what sociology was like before Auguste Comte, and we will also be highlighting some of the major works of the early sociologists that are Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx and others. Alright, so before we start this video, I would like to request you all to kindly subscribe to my channel, press the bell icon beside it and share your views in the comment section below. So basically, sociology has a long past but only a short history. Sociology, which is known as the science of society, is one of the youngest as well as one of the oldest of the social sciences. It is one of the youngest sciences. Why? Because only recently it came to be established as a distinct branch of knowledge with its own distinct set of concepts and its own methods of inquiry. So sociology is one of the oldest of the sciences as well. Why? Since the dawn of civilization, society has been a subject for speculation and inquiry along with other phenomena which have agitated the restless and inquisitive mind of man. Even centuries ago, men were thinking about society and how it should be organized. They held views on man and his destiny, the rise and fall of people and civilizations. Though at that time they were thinking in sociological terms, they were still called philosophers, historians, thinkers, lawgivers or seers only. At that time, the term of sociologists was not used for such people who were focusing on sociological imagination or sociological thought. Alright? So for thousands of years, men have reflected upon societies in which they lived. In the writings of philosophers, thinkers and lawgivers of various countries of various epochs, we find ideas that are sociological. For instance, in the writings of Plato, Aristotle, Manu, Cottilia, Confucius and others, we find major attempts to deal methodically with the nature of society, law, religion, philosophy, etc. For instance, Plato's book named Republic, Aristotle's book named as Politics, Cottilia's Arthashastra, Manu's Smriti, Confucius' Analects and Cicero's On Justice are some of the ancient sources of social thought. However, it was only in the 19th century that systematic attempts were made by Auguste Comte, Spencer, Durkheim, Weber and others to study society and to establish a science of society called sociology. So it is evident that the social thought and enlightening of social life was already present in the earlier contributions of philosophers, but establishment of principles and building blocks of sociology as a discipline were laid down by classic sociologists known as Khaldun, Comte, Spencer, Simon, etc. So in this video we studied कि sociology को oldest of the sciences भी कहा जाता है और youngest of the social sciences भी कहा जाता है. Oldest of the social sciences इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब से society वजूद में आई है, जब से इंसान वजूद में आया है, जब से लोग वजूद में आए, तो हमेशा से जो किसी भी society में intellectuals present होते हैं, ये उनके लिए ये topics होते हैं बहुत ज़्यादा interesting और curiosity होती है intellectuals को कि वो society के different aspects को वो study किया करते थे. जैसे कि हमने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया कि डिफरेंट फिलोसोफर्स उस टाइम पर अपनी राइटिंग्स जो है ना वो प्रेजेंट किया करते थे, अपनी बुक्स अपनी राइटिंग्स के थ्रू सोशल थॉट प्रेजेंट किया करते थे, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया करते थे, जिसकी वजह से ये एक फैक्ट है कि ऑल्दो सोशियोलॉजी का टर्म उस वक्त मौजूद नहीं था, ऑल्दो सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं थी, ऑल्दो सोशियोलॉजी इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं था उस वक्त, लेकिन सोशल थॉट प्रेजेंट था. सोशियोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्टडी किया करते थे, उस पर बुक्स लिखा करते थे, उस पर राइटिंग्स दिया करते थे. जैसे प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, एरिस्टोटल की किताब है पॉलिटिक्स, तो वो समाज के सोसाइटी के बहुत सारे हिस्सों को स्टडी करके उस पर अपनी राइटिंग्स दिया करते थे बिफोर सोशियोलॉजी बिकेम अ साइंस. ठीक है, ये उस वक्त की बात हो रही है. तो इससे पता चलता है कि सोशियोलॉजी हालांकि उस वक्त कोई सब्जेक्ट इन इटसेल्फ नहीं था, कोई कोर्स इन इटसेल्फ नहीं था, लेकिन सोशल थॉट प्रेजेंट था और इसी की वजह से जो है सोशियोलॉजी फिर बाद में 19th सेंचुरी के वक्त जब काफ़ी डेवलपमेंट हुई, जब यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वजूद में आया और जो है ना साइंस ने तरक्की की, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न एरा शुरू हुआ, तो उस वक्त आफ्टर द 19th इट वाज ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, दुर्खाइम एंड इस तरह के डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ने सिस्टमेटिक अटेम्प्ट्स के थ्रू सोशियोलॉजी को एक टर्म दिया. उन्होंने ये बात पेश की कि सोशियोलॉजी इन इटसेल्फ एक
प्रॉपर पूरी साइंस है. सोशियोलॉजी को फिर जो है द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे एंड सोशियोलॉजी was brought out of the realm of philosophy and it was now called a science. ठीक है, सोशल साइंस. सोशियोलॉजी फिर एक सोशल साइंस बन गई, प्रॉपर साइंस इसी वजह से बन गई क्योंकि इस पर फिर सिस्टमेटिक स्टडी की जाने लगी, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ आ गई सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए. तो अब सिर्फ जो है ना फिलोसोफर्स का काम नहीं है ये सोशियोलॉजी स्टडी करना. सोशियोलॉजी को स्टडी करना इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ऑलराइट, वेयर साइंस यू आर स्टडीइंग दी सोशियोलॉजी एंड द माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो जहाँ पे रिसर्च और जहाँ पे थ्योरीज आ जाती हैं, जहाँ पे रिसर्च आ जाती है, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स आ जाते हैं, ऐसा जो भी डिसिप्लिन होता है वो फिर साइंटिफिक होता है. तो इसी वजह से फिर मैक्स वेबर, दुर्खाइम, ऑगस्ट कॉम्टे इन सब ने अपने कामों से सोशियोलॉजी का टर्म एक तो प्रेजेंट किया और दूसरा सोशियोलॉजी को साइंस कहा कि सोशियोलॉजी एक साइंस है. लेकिन बिफोर 19th सेंचुरी सोशियोलॉजी को साइंस के तौर पर नहीं देखा जाता था. ये सिर्फ फिलोसॉफिकल टर्म्स में फिलोसोफर्स इसको सोशियोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करके अपनी राइटिंग्स प्रेजेंट किया करते थे. ठीक है, सो इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी अर्लियर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिलोसोफर्स. लेकिन जो सोशियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्टेब्लिश किए वो ऑगस्ट कॉम्टे, इब्न खल्दून और इमाल दुर्खाइम और हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इनके कामों से जो है ना सोशियोलॉजी एक साइंस बनी. So this was all about our video today. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon beside ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी अपडेट्स मिल सकें. Thank you so much.